So hello guys, I'm Sumit Nahak. I'm your physics tutor. I was teaching you rotational motion. We had learned about all the basics of rotational motion. So basics more at least introduction. I had given you the introduction of rotational motion in session one. Now we will be continuing rotational motion, and I will be describing you all the topics thoroughly today. So my name is Sumit Nahak. I had secured all India rank 691, and I am currently pursuing MBBS and aim to NCERT. So let's start with the topic today. Okay. So तमु first session रे मु सब टॉपिक रोटेशनल मोशन रे सब टॉपिक रो इंट्रोडक्शन दे सारथिली. इंट्रोडक्शन रे मु तमु पढे कहितली सेंटर ऑफ मास विषय रे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क विषय रे, देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सब टॉपिक रे मु तमु बेसी इंट्रोडक्शन ही देथिली. तो आज आमे सब टॉपिक को थोरली पढ़िया. और किछि टॉपिक्स मु से दिन जार इंट्रोडक्शन दे नथली से टॉपिक्स आज कि जितने भी टॉपिक्स आज नेक्स्ट सेशन आज सेशन में कंप्लीट हो पारछि सेति हमें कंप्लीट करिया. ओके. तो मु तमु फर्स्ट सेशन में सेंटर ऑफ मास विषय पढ़ितली. सेंटर ऑफ मास विषय कोन होइतले? सेंटर ऑफ मास टिके फर्स्ट इनिशियली रिवीजन करता. तो मैं हमर नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़िया को जाउछंती मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़िया आगरो हमको सेंटर ऑफ मास विषय टिके बेसिक आइडिया थिबा निहात जरूरी. सेति हम तुम सेंटर ऑफ मास रो टिके इंट्रोडक्शन कहि दोछ पुणी. तो सेंटर ऑफ मास विषय हमें कोन पढ़थिले? सेंटर ऑफ मास रो मीनिंग होची center of mass to meaning kana. Center of mass is defined as a point where all the mass of the body is concentrated. Okay, तर meaning kana जदि हमें कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट दबा तार सब जाक मास को पॉइंट रे कंसंट्रेट होची सेडा को तार सेंटर ऑफ मास. फॉर एग्जांपल मु जदि गोटे स्फीयर नेबी, स्फीयर रो पूरा सेंटर ऑफ मास कोडी आछो तार सेंटर रे. कोन पे कमे तार सब जाक मास सेंटर रे कोऑर्डिनेट सेंटर रे लाई करे. नेक्स्ट जदि मु गोटे एग्जांपल लेबी क्यूब रो. फॉर एग्जांपल गोटे क्यूब नबा, क्यूब रे सेंटर ऑफ मास कोडी लाई करियो तार सेंटर तार क्यूब रो सेंटर किमि जानिया तार सब जाक डायगोनल क्यूब रो सब जाक डायगोनल जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट करदी सेडा होची तार सेंटर ऑफ मास. देन फॉर एग्जांपल गोटा हम यूज ट्रायंगल लेबे, ट्रायंगल रे सेंटर ऑफ मास कोडी लाई करियो जो पॉइंट रे तार तीनटा जाक मीडियन इंटरसेक्ट हो. तीनटा थ्री मीडियंस रा इंटरसेक्शन पॉइंट होच तार मीडियन ए होच तार सेंटर ऑफ मास. एडा होच तार सेंटर ऑफ मास. ओके. तो सेंटर ऑफ मास रा बेसिक आइडिया होची जो पॉइंट रे सब जाक मास कंसंट्रेटेड होची सेडा को आजे तार सेंटर ऑफ मास. ओके. ओके. आ सेंटर ऑफ मास विषय एति जानिया दरकार. आ मो सेंटर ऑफ मास विषय कोन कहितनी फार्मूला. जल्दी तुम मो दीटा मास दे दोची गोटे होची m1 आ गोटे मास दे दिछि m2. M1 lies on the coordinate x1, y1. M2 lies on the coordinate x2, y2. Then our center of mass kim divided. Our center of mass में formula कौन मुझे कहती थी? X coordinate of the center of mass. Center of mass और x coordinate पे हमें कौन करिया? M1 x1 plus M2 x2 divided by M1 plus M2. Y coordinate पे हमें same simply कौन करिया? M1 y1 plus M2 y2 divided by m1 plus m2. ओके. तो जत्रा भी एडी तीनटा ऑब्जेक्ट ला सेति में m1 x1 plus m2 x2 कले जदि तीनटा ऑब्जेक्ट था तो m3 plus x3 एडी था तळे m3 ऐड कर देहनो जत्रा मास थिबो ता अनुसार. ओके. तो ओवरऑली हम जानिया पई फार्मूला एडी दे दी देता. एडी तीनटा ऑब्जेक्ट से एग्जांपल नेतला तो से तीनटा एग्जांपल तीनटा पे m1 x1 m2 x2 plus m3 x3 कला. ओके. जत्रा ऑब्जेक्ट जदि मान n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तार x कोऑर्डिनेट पे n number of times हमें से x coordinate से तो multiply करें divided by sum of all the masses. Okay. तो sum of all the masses में कौन फॉर्मूला? सिग्मा. तो ये फॉर्मूला तो हम मन रखियो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन. ओके. तो ये फॉर्मूला मन रखले सेंटर ऑफ मास इजी बार बट सेंटर ऑफ मास आई होप बेसिकली तुम प्रॉपर्ली कवर करथिले तो मन थिबो. आज हमें किछि नॉर्मल एग्जांपल्स हमें सॉल्व करिया सेंटर ऑफ मास जा गए तमरा कांसेप्ट मोर क्लियर हो. ओके. तापर म आउट जिंस तुमको कहथि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन डेफिनेशन. ट्रांसलेशनल मोशन माने कोन? इन a pure translational motion at any instant of time all the particles of the body have the same velocity. माने करो एडा होछ गोटे ऑब्जेक्ट जे कि किछि वेलोसिटी रे जाउछि तार मीनिंग कोन? ए पार्टिकल्स जत्रा भी पार्टिकल्स समस्त वेलोसिटी कांस्टेंट. माने करो एठी गोटे हम ऑब्जेक्ट नबा
तार वेलोसिटी जदी v1 ए पॉइंट जदी म आउट ने पार्टिकल तार वेलोसिटी v2 इडी सब बेले v1 इक्वल टू v2 बट इन रोटेशनल मोशन कोन जदी हम गोटे एग्जांपल गोटे पेन मुने भी पेन रे सब जा पार्टिकल रो वेलोसिटी और रेडियस डिफरेंट v रेडियस वेरिएबल आ गोटे एक्सिस अराउंड सब रोटेशनल मोशन और वेरिएबल ओके ए सब होइतिला आज मो एग्जांपल्स हमें करिया तो सेंटर ऑफ मास चरता तीन एग्जांपल देखिदा देन हमें मूव करिया नेक्स्ट टॉपिक को जोड़ा होचे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जोड़ेगे हमारा आज मेन टॉपिक ओके तो एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जांपल ला सेदिना मु तुमको कवर करितली बट इस एग्जैक्टली एग्जांपल देनली तो आज मु आउथरे तुमको कह दोछे फाइंड द सेंटर ऑफ मास find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram, and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is given 0.5 gram, 0.5 meter long. Okay? तो तीनटा ऑब्जेक्ट हमो दे देछि गोटे ऑब्जेक्ट अछि 100 ग्राम रो आउट ऑब्जेक्ट अछि 150 ग्राम रो आउट ऑब्जेक्ट अछि 200 ग्राम रो ओके जत्ती जिंस गिवन अछि फर्स्ट लिख दियो m1 इक्वल टू 100 ग्राम m2 equal to 150 gram, m3 equal to 200 gram. Okay? आ सब जगह गिवन दे दी थी लेंथ होची 0.5 मीटर 0.5 मीटर तो हमको फर्स्ट कौन काढियार अछि आरो हमको कौन काढियार अछि कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट 0 आर कोऑर्डिनेट x1 0 x2 0.5 समस्या फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट लिखुची तापर हम y कोऑर्डिनेट ओके x3 हमें जानना है कैलकुलेट करया पड़ियो y1 0 y2 0 तो हम कोन करया अछि y3 कैलकुलेट करया अछि तो जतो ए पॉइंट रे हमें कोऑर्डिनेट जानना है कोन करया एडा कोटा में राइट एंगल ट्रायंगल भी जानछन एडा इक्विलेटरल ट्रायंगल को जदी हम गोटे मीडियन एटी दबा तो एडा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ही अछि ना तो राइट एंगल ट्रायंगल रे हमें आर लेंथ जानछन 0.5 मीटर एडा कोन हाइपोटेनस हम जानछन 0.5 मीटर आर लेंथ जानछन 0.25 मीटर तो आर लेंथ हमें काट दी पड़े तो y एक्सिस वैल्यू पड़ा आसला 0.25 √3 ओके तो कैलकुलेशन पार्ट नीचे के करियर था 0.25 √3 और आर एक्स कोऑर्डिनेट केता 0.25 तो सब जार वैल्यू हम पर डायरेक्ट अछि तबरे एडी कोन काडिया कोइ सेंटर ऑफ मास पे कोन काडियो x रो सेंटर ऑफ मास पे फार्मूला m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3 m1 रो वैल्यू अछि 100 ग्राम x1 रो वैल्यू अछि 0 m2 रो वैल्यू अछि 150 ग्राम x2 रो वैल्यू अछि 0.5 मीटर m3 रो वैल्यू अछि 200 ग्राम x3 रो वैल्यू अछि 0.5 तो सब वैल्यू एडी गिवन अछि राइट ओके सब जा फार्मूला पकेला पर आंसर असला 5/18 मीटर ओके सेम सेम y by मी m1 y by फार्मूला सेम फार्मूला तो कोन y रो सेंटर ऑफ मास ए फार्मूला कोन m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3 सब जगह वैल्यू गिवन আছে put the formula get the answer okay m1 y1 m2 y2 y3 सब जगह वैल्यू गिवन আছে या सेकंड क्वेश्चन टिके ट्रिकी माने एते भी ट्रिकी हो बट टिके ओके टिके भाबिया पड़े फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लेंथ सेडा तुम एग्जांपल देखि म आगुरु कहि देतिले पे बितल देख एग्जांपल नंबर 2 इट्स पॉइंटिंग जो ट्रायंगल दे दीजिए ट्रायंगल रामु कोन काइडर আছে सेंटर ऑफ मास तो ट्रायंगल द सेंटर ऑफ मास काइडर हम किन काइडर ओके तो ट्रायंगल देखो मु कोन करबे बहुत टाइप पार्ट रे डिवाइड कर बहुत सारा ट्रापेजियम ही जो तो मुडा को 5 रे भाग करली आरो मते 5 गा भाग कला पर सब जकर मिड पॉइंट देखो ए ट्रापेजियम रो ए जो लास्ट ट्रापेजियम नंबर 1 ट्रापेजियम नंबर 2 3 4 touch 5 ए ट्रापेजियम रो सेंटर ऑफ मास को लाई करियो तार पूरा मिड पॉइंट आरो पूरा मिड पॉइंट ए ट्रापेजियम रो मिड पॉइंट ए ट्रापेजियम रो मिड पॉइंट सॉरी तार मिड पॉइंट तो सब जाक जतलो मिड पॉइंट मो जॉइन करी जिबी तो मते कोन मिलला ए ट्रायंगल रो मीडियन ओके सेम समिति मु जदी
ए ट्रायंगल को मु इमिति भाबरे ट्रापेजियम बनेइली जदि हमें एबे आउट ए सेम ट्रायंगल को ए टाइप रो ट्रापेजियम बने ए टाइप रो ट्रापेजियम बने ए टाइप रो ट्रापेजियम बने कि आउट जदि मु पॉइंट देबी आउट कोन आछो आउट मीडियन पळ आछो सेम सेम एपड़ आड़ भी जदि हमें ट्रायंगल बने बने जिबी एपड़ आउट तार मीडियन पळ आछो ओके तापरे जो मझरे जो पॉइंट आसला सेडा होची तार सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना ओके तो बेसिकली तुम ट्रायंगल रो सेंटर ऑफ मास में कौन काढियार अछि ड्रॉ थ्री मीडियंस पॉइंट ऑफ intersection of all the three medians give us center of mass okay so triangle example number 2 our clear ite moil sir okay then now I say example number 3 example number 3 रे हम कोन कोची find the center of mass of the uniform L shaped lamina एटा होची लामिना होल लामिनी ओके आर भी गोटे टाइप रो एग्जांपल इंट्रोडक्शन वीडियो रे कहतिली बट फिर भी एग्जांपल में करदा ओके द मास ऑफ द लामिना इज 3 kg टोटल मास से लामिना रो से दे दी 3 kg तो से हम मास जो हम क्वेश्चन की सॉल्व करिया देख तो मते से लामिना दे दी 3 kg रो ओके द गोटे स्क्वायर इमेजिन कर तो यार लेंथ मते गिवन अछि 1 मीटर तो आर जदि कोऑर्डिनेट मते 0 0 नेबी आर लेंथ मते गिवन अछि 2 मीटर तो आर लेंथ आर कोऑर्डिनेट के तब 2 0 आर लेंथ के आर कोऑर्डिनेट के तब 1 0 x आर पूरा लेंथ होछि 2 मीटर तो आर लेंथ आर कोऑर्डिनेट ला 2 0 एडा होछि तार मिड पॉइंट तो आर कोऑर्डिनेट ला 1 0 आर कोऑर्डिनेट 1 1 आर कोऑर्डिनेट 0 2 आर कोऑर्डिनेट x एक्सिस रे 1 y एक्सिस रे 2 ओके तो ए टाइप रो क्वेश्चन को जता हम अप्रोच करिया से कोन होइते 3 kg पूरा होल मास इक्वल टू 3 kg तो एटा जदि हम तीन भाग रे डिवाइड करी आर मास हो केता हो m1 रो मास हो 1 kg m2 रो भी मास हो 1 kg एबे देखो हम ट्राई कर m3 रो मास हो 1 kg ओके तो मोटे जदि तीनटा पार्टिकल डिवाइड कर देली हमें तो कोन करिया सब जकर सेंटर ऑफ मास काढिया तीनटा ऑब्जेक्ट रो सेंटर ऑफ मास काढिया आर सेंटर ऑफ मास कोडी आछो पूरा सेंटर रे आर सेंटर ऑफ मास कोडी आछो पूरा मझरे आर सेंटर ऑफ मास पूरा मझरे आछो ओके तो सेंटर ऑफ तीनटा जकर हमें कोऑर्डिनेट फर्स्ट काढ फर्स्ट होची मोर ऑब्जेक्ट c1 रो कोऑर्डिनेट केता हो c1 रो कोऑर्डिनेट केता हो x एक्सिस रे केता हो एडर लेंथ होची 1 मीटर तो सी सब बेले 0.5 पे रहइबो तो x एक्सिस रे तार कोऑर्डिनेट होची 0.5 x1 0.5 y1 रो वैल्यू केता हो आर मझिर से रहियो तो आर मझरे माने 80.5 आसी बता 1 + 0.5 केता हो 1.5 ओके सेम सेम आर x एक्सिस रे केता हो आउथरे 0.5 y एक्सिस रे केता हो एडी भी 0.5 सेडी हम कोन पे 1.5 लिखले कमे एती जे 1 थिला 1 + 1.5 कोऑर्डिनेट पे आ y कोडी मु ऐड करतिले ओके तो एडी तार x एक्सिस रे केता हो 1.5 y एक्सिस रे 0.5 ओके तो अबे सब जा वैल्यू अछि तम बागरे m1 रो वैल्यू अछि m2 रो वैल्यू अछि m3 रो वैल्यू अछि m1 केते 1 kg m2 1 kg m3 1 kg x1 0.5 x2 0.5 x3 1.5 y1 1.5 y2 0.5 y3 0.5 ओके तो एटू डायरेक्ट फार्मूला को आंसर काढी परि आराम x सेंटर ऑफ मास पे फार्मूला जानचो y सेंटर ऑफ मास पे फार्मूला जानचो ओकेला फार्मूला पकेला m1 x1 m2 x2 m3 x3 ओके फार्मूला पकेला आंसर काढला ओके तो इजी न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करे ट्राई करे आराम से ओके एडम नेथले ऑब्जेक्ट 1 2 3 तो तीनटा एग्जांपल तमो मु आज कहिथि और सेंटर ऑफ मास हम कुछ रिवीजन कर देली आज हमें जिबा एबे हमर आज रो मेन टॉपिक होची मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आज रो इंपोर्टेंट टॉपिक
ମୁଁ ଏ ଟपिक ପଢିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟम ଅଫ ପାର୍ଟିकल्स भी टर्म यूज करिए बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेम एज सेंटर ऑफ मास ओके जदि मु कहली मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहां तार मीनिंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तार मीनिंग सेम ओके तो कंफ्यूज किछि हबार नै ओके तो हम बुक रो मु जेतरा टॉपिक देखियो जी टिके तमो कॉम्प्लेक्स लागिया सेति मु तमो फर्स्ट कोटे मु ग्राफ रे डायग्रामेटिकली मु टिके तम बुझे दोचे तापर जेतरा हम बुक को जिबा सेतरा मु इजीली बुझा पड़े ओके तो मु गोटे ग्राफ ड्रॉ करछे ठीक दीटा ऑब्जेक्ट also दीटा ऑब्जेक्ट सेम दीटा कोऑर्डिनेट एडा होची तारो सेंटर ऑफ मास माने करो एडा को मु टिके वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करछे ओके वेक्टरली रिप्रेजेंट करछे एडा होची माने करो वेक्टर r1 एडा होची वेक्टर r2 एडा होची माने करो वेक्टर r कैपिटल R तो देखो अभी एडी x रो कोऑर्डिनेट हम कर पे एटा तो इजी तम 10 तरह कहली नहीं x कोऑर्डिनेट काढे में कोन फार्मूला m1 x1 m2 x2 सेंटर ऑफ मास x माने x सेंटर ऑफ मास तो एबे सब जको मोशन एबे हम देखबा पे तो वेक्टर r1 इज इक्वल टू अरे सी वेक्टर r1 रो एत कोन हो x1 i cap प्लस y1 j cap वेक्टर r2 x2 i cap plus y2 j cap r रो x i cap plus y j cap ओके तो जति मते एठी r रो कोऑर्डिनेट काढे पे कहबो r रो वैल्यू कोन हो m1 r1 सेंटर ऑफ मास r रो सेंटर प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एडा होची पोजीशन वेक्टर ओके तो एबे मो तमो एपिटिक कॉम्प्लेक्स इनसे स्टार्ट एतर जे ऑब्जेक्ट कोन पिला मोशन रे नतला ऑब्जेक्ट वाज ऑन रेस्ट ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट एबे कोन ऑब्जेक्ट को मो दीटा ऑब्जेक्ट को मूव करोच किछि मो वेलोसिटी दोच ओके बोल जे क्लियरली सुनो ए ऑब्जेक्ट दीटा ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दोच वेलोसिटी v1 आपको ये वेलोसिटी दोच वेलोसिटी v2 तो जतला ऑब्वियसली दीटा ऑब्जेक्ट मूव करिया सेंटर ऑफ मास भी मूव करियो ऑब्वियस कथा तो हम मोडी कोन करिया अछि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रो कैलकुलेशन करिया ओके तो मरकर ऑब्जेक्ट m1 is moving at a speed of velocity of v1 and object m2 is moving at a speed of a velocity of v2 तो हम कोन करिया अछि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ तो हम बकरे सेंटर ऑफ मास रो पोजीशन वेक्टर अछि और हमें बेसिक नॉलेज था हमें ट्रांसलेशनल मोशन रे काइनेमेटिक्स रे बेसिक नॉलेज में हमें कोन जानथिले वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम बा dr by dt ओके dr by dt माने डिफरेंशिएशन कले वेलोसिटी आछो पोजीशन वेक्टर रो डिफरेंशिएशन कले वेलोसिटी आछो ओके सो v equal to dr by dt so d m1 r1 plus m2 r2 एटी दीटा ऑब्जेक्ट अछि जति n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थांता mn rn divided by dt ओके तो डिफरेंशिएशन वाला एडा पुडु पळाछो डिनोमिनेटर ऊपरे सब जाको बे डिफरेंशिएशन हबो d m r1 by dt plus d m r2 by dt ओके 1 by सब जा मास रे सम केते कैपिटल m n नंबर ऑफ पार्टिकल पूरा होल ऑब्जेक्ट रो मास केते कैपिटल m एडी m डा को साइड कर दियो m1 को साइड वन दियो dr1 by dr2 dr1 by dt plus m2 को साइड वन दियो dr2 by dt तो कितना तक n जाए तो वेलोसिटी फार्मूला आसले नहीं देखो m1 dr1 by dt रो वैल्यू कोन हम कोन कहितले वेलोसिटी इक्वल टू dr by dt तो v1 इक्वल टू केता हो dr1 by dt टाइम्स v2 इक्वल टू केता हो dr2 by dt तो dr1 by dt इक्वल टू velocity of particle 1 dr2 by dt equal to velocity of particle n so m n v n okay तो velocity रो फार्मूला कोन आसला
velocity of center of mass equal to m1 v1 plus m2 v2 tick 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 mn vn divided by sum of all the masses. ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି। ଓକେ, ତ velocity କାଢିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଶିଖିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ସେ ପୋଜିशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कला। एठी बुक रे एक्सप्लेनेशन है, मैं एक्सप्लेन करली वेलोसिटी वेक्टर कला। तर वेलोसिटी रो फार्मूला आसला ए मास टा जदी हमें एठी डिवाइड करदा तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू m1 v1 m2 v2 बाय कैपिटल M। कैपिटल M माने मास टा एठी मल्टीप्लाई अछि, कैपिटल डिवीजन हबो। मास टा एठी मल्टीप्लाई अछि, एपट जदी आस्ता माने डिवीजन हबो। सेम से एडा जोडा अछि कैपिटल M एठी कैपिटल M डिवीजन अछि v इक्वल टू। ओके, तो बुक से तो बुक रे देखे देले थोड़ा वेलोसिटी रो फार्मूला पढ़ा। सेम सेमदी एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू कोन? जिंदी वेलोसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ the position vector, same the acceleration is equal to differentiation of velocity. Okay, differentiation of velocity. तो velocity vector हम पाकर अच्छी differentiation करो तो पहले हम acceleration में जो करिया differentiation with respect to time. कैपिटल M डायरेक्ट लिख दो छी। कैपिटल M बाहर आसला और फिर सेम जिनसे स्टार्ट हबो t m1 v1 divided by dt plus d m2 v2 divided by dt तक 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 m1 डाउ एपड़ अंदबी dv1 by dt रो वैल्यू कोन? एक्सेलरेशन 1। सेम सिंदी dv2 by dt रो वैल्यू कोन? एक्सेलरेशन 2। सेम सिंदी nth number of particle कोन हबो? mn by an। तो acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 divided by sum of mass of all the particles। yeah, तो acceleration रो फार्मूला भी आसी गला। एबे हमें नेक्स्ट पढ़िया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम पढ़तिले। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम वेलोसिटी काढिया रो तुमको कहली, एक्सेलरेशन काढिया रो कहली, वेलोसिटी एटी तुमको देखली, एक्सेलरेशन काढिया रो तुमको देखली। एबे मु कहबी फोर्स। फोर्स इक्वल टू हमें कोन पढ़तिले? न्यूटन्स लॉस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रे मु कोन कहतिले? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर केते फोर्स पड़छ? एक्सटर्नल फोर्स और सेंटर ऑफ मास ऊपर केते फोर्स पड़छ? मास माने कोन? कैपिटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जहां से मिले चला हम कटला तो f external is equal to mass into capital A by acceleration is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus n। okay, external force formula plus এটা। ओके, तो इथियो जहां लिखा है एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास केबेले मूव करनी जेतल पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स लागी न थाए ए सब मु तुमु जस्ट टिके परे ए टॉपिक को आसुचे। एबे फर्स्ट तो मोमेंटम पढोछ। ओके, फर्स्ट मु तुमु कहूछ मोमेंटम पढला परे जेतल अछि के प्रॉपर्ली क्लियर हो विथ एग्जांपल्स। तो तुमु किछ एग्जांपल्स भी देबे तासे तुमु प्रॉपर्ली क्लियर हो। ओके, तो फर्स्ट तुमु लीनियर मोमेंटम कर दोछ। लीनियर मोमेंटम कहि छी तुमु लीनियर मोमेंटम रो वैल्यू कोन? p इक्वल टू mv। ओके, तो लीनियर मोमेंटम होता है मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहती न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कहती फोर्स इक्वल टू dp by dt। तार मीनिंग फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास मुझे हां फोर्स इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेटा होची फोर्स। ओके, तो
जदि आम कौन गोटे ऑब्जेक्ट रे मोमेंटम चेंज ही नहीं, नो चेंज इन मोमेंटम, तो ऑब्जेक्ट जदि नो चेंज इन मोमेंटम माने तर जदि मोमेंटम जीरो, सॉरी मोमेंटम चेंज ही नहीं माने मोमेंटम इज कांस्टेंट बा सेटा को हमें अलग कौन कह चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम बा डीपी इज इक्वल टू जीरो। जदि चेंज इन मोमेंटम जीरो ता ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो। ओके, चेंज इन मोमेंटम जो जीरो ता ऊपर एक्सटर्नल मोमेंटम भी जीरो, पी इज कांस्टेंट। ओके, तो एटा को बच्चे टी कहबा को चाहूँ देखो तुम मोमेंटम इक्वल टू एम भी थिला, तो सेंटर ऑफ मास जो मोमेंटम काढिया किन काढि परिया m1 v1 सेम सेमिति सब जाक जति की पार्टिकल दिबो सब जाकर सेम सम। ओके ओके, तो मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सब जाक मास सब जाक छोट छोट मास रो तांकर इंडिविजुअल वेलोसिटी सहित मल्टीप्लाई करी सब जाकर सम अप। तो एडी कोन लिखा है the total momentum of the total momentum of the system of particles is equal to the product of total mass of the system and the velocity of its center of then total momentum is equal to the product of total mass of the system, product of total mass of the system, total mass of the system, mass of system multiplied by velocity of its center of equal to pc। the same thing बोलते ओके। तो एबे हम गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट मु तुमको कहया जाचे लेसन केयरफुली। ओके, हां, तो जत्ता पर्यंत गोटे एडी गोटे हम अछि जत्ता पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट रे एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जत्ता पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट रे हम एक्सटर्नल फोर्स हम किछि देई ना सेत्ता पर्यंत से ऑब्जेक्ट रे मोमेंटम कांस्टेंट रहइबो। सेटा को हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रे एडी जे तुमको कहली आउट टिके डिस्क्राइब कर दो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कोचे जितना पर्यंत एफ एक्सटर्नल इज जीरो, एफ एक्सटर्नल if force on the external force is zero, momentum will always remain constant, momentum will always remain constant। किमिति एटा जଣା पड़छे f equal to dp by dt, तो जदि फोर्स जीरो तो dp is p is constant, no changing p। ओके, तो सेटा को हमें किछि बहुत सारा एग्जांपल्स भी हमें बुझ पारे बुझिला। एटा मु आउतरे लेखि एडी तुमको कहयो चाहछे if total external force acting on a body is zero, momentum of system always remains constant। ओके, तर हम किछि एग्जांपल्स होछि ना वो जे क्लियर हो। ओके, देखो कुछ मो एग्जांपल्स होछि ताको हमें टिके अलगा भाबे जदि हम बुझियो को चाहिया एटा हम ए लाइन टा पढो if the total if the total external force acting on the system is zero, the center of mass moves with the constant velocity, that is moves uniformly in a straight line like a particle। तर मीनिंग कोन जेतल पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो अछि तार एक्सटर्नल फोर्स जेतल जीरो अछि तार मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज मोमेंटम माने कोन वेलोसिटी, वेलोसिटी जेतल पर्यंत कांस्टेंट रहय सेटा को हम अलग वे रे कोन बुझ परिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कांस्टेंट if f external is zero। okay, velocity of center of mass remains constant if the velocity is if the force is zero, external if the external force is zero। आपको मु किछि एग्जांपल्स दबा को चाहूँ एडी तो कहते तुमको किछि गोटे मन जिंस छाड़ी आछि बेले एटा ही तुमको स्तर को कहय चाहतली मु आगो बढ़ली। देखो कोन लिखा है the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at the same point। मारो गोटे एग्जांपल दोछि क्लियर हो प्रॉपर्ली एग्जांपल दोछि। ओके, ए सेम एग्जांपल जति गोटे बॉम्ब को मु छाड़ले बॉम्ब। ओके,
बम टा ए पॉइंट को जाके एक्सप्लोड कला तो बम रो किछि पार्टिकल्स ए डायरेक्शन रे गले किछि पार्टिकल्स ए पाथ फॉलो कले किछि पार्टिकल्स इंडिकल पाथ फॉलो कले किछि पार्टिकल्स पूरा ऊपर गला किछि पार्टिकल्स तळु आसला तो कि जो पार्टिकल्स जपड़े भी जाओ कौन पे ना बम रे एक्सटर्नल फोर्स जीरो थिला किछि फोर्स एक्ट करनी बम बम एक्सप्लोड कौन पे ड्यू टू इट्स एफ इंटरनल एफ एक्सटर्नल इज जीरो ओके तो एक्सटर्नल फोर्स किछ लगेनी जेहेतु इंटरनल फोर्स से एक्सप्लोड करछे तार बम रे सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी सब बेले कांस्टेंट रहइबो आउ सेंटर ऑफ मास जो जो पाथ रे बम जाई थांदा जदी से एक्सप्लोड न कर थांदा से पाथवे रे ही जीवो जदी बम इफ जदी बम जो पाथ रे जदी से एक्सप्लोड न कर थांदा जो पाथ रे थांदा एपे से एक्सप्लोड कला परे भी सेंटर ऑफ मास रो पाथवे सेम रहइबो सेंटर ऑफ मास pathway of center of mass is same as it would have been as it would have been as it would have been if there was no explosion okay same pathway follow kariya okay it our example next example that ki deiba radioactivity theory mu gauche jodi mo example lebi radon what element ache si jodi disintegrate होची into helium sorry radium the disintegrate होची helium आउ radon sorry helium आउ radon तार सेंटर ऑफ मास x लाई करी ओके एडा कोन पे होची देखो कोन पे ना रेडियम ऊपर किछ एक्सटर्नल फोर्स पड़ नथिला तो तार जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहइबो वेलोसिटी माने कोन तार डायरेक्शन भी सेम रहइबो और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहइबो सेम रोचे हम किन जानछन तो मैंने रेडम ना होची हाई मॉलिक्यूलर वेट ये होचे लो मॉलिक्यूलर वेट देखो लो मॉलिक्यूलर वेट एडी ऊपर गला हाई मॉलिक्यूलर वेट पाखा पाखी जाई कोन पे ना जब सबले मु कहतनी जदी दीटा गोटे अधिक वेट वाला अछि गोटे स्मॉल वेट वाला तर सेंटर ऑफ मास थोड़ा अधिक वेट वाला पाखे तो अधिक वेट वाला जेहेतु पाखा पाखी अछि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पाखा पाखी रहयो तार वेलोसिटी चेंज होवनी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट ओके तो सबले रेडन टा पाखा पाखी जीव एक्सिस्ट और विलियम टा दूर जीव एटा गोटे प्रॉपर बढ़िया एग्जांपल सेंटर ऑफ मास रो पाथ चेंज होनी until an external force is applied सेम गोटे एग्जांपल दे परिया मु दीटा स्टार जदी नेबी S1 S2 गोटे स्टार को मु देखोची पिंक कलर रे और गोटे स्टार को मु देखोची पर्पल कलर ओके तार सेंटर ऑफ मास लाइक होचेडी तो जतळ पर्यंत मनकर आरो पाथवे को मन देखोची तारो पैरेलल टू दिस आरो भी जेते से माने दिजन जाको सेम वेलोसिटी रे मूव करछन v1 v2 आर सेंटर ऑफ मास तो सब बोले कांस्टेंट ही रहइबो सेम वेलोसिटी पॉइंट ता सब बेले सेम जगह रे रहइयो आउट सीधा 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 ही मूव करियो ओके एटा कहते बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार्स ओके वेलोसिटी कांस्टेंट रहइयो सेम डायरेक्शन जो डायरेक्शन रे थिला अ पॉइंट जोडी सेंटर ऑफ मास ला सेट ही रहइबो ओके तो आज तो मु कोन पढिली एबे पर्यंत पढै सेंटर ऑफ मास विषय पढिली सेंटर ऑफ मास किछि एग्जांपल्स देली सेंटर ऑफ मास विषय पढले तापर हम पढले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रे पोजीशन वेक्टर स्टडी पोजीशन वेक्टर रो वेलोसिटी किन सेटू एक्सप्रेशन किन काडा जरा हम सिखिए तापर सिखिए फोर्स रो फार्मूला किन निकाल से सेंटर ऑफ मास रे लीनियर मोमेंटम को रिलेट करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और तार किछि एग्जांपल्स NCERT example देखले एबे हम आसिया वेक्टर प्रोडक्ट ओके तो आई होप एती तमरो क्लियर अछि वेक्टर प्रोडक्ट के आसिया वेक्टर प्रोडक्ट पूरा इंपोर्टेंट टॉपिक्स एबे हम जिबा वेक्टर प्रोडक्ट तो वेक्टर प्रोडक्ट में फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट तमे किन रिप्रेजेंट करनती जदी होछि ए होछि गोटे वेक्टर बी होछि गोटे वेक्टर तो स्केलर प्रोडक्ट बा डॉट प्रोडक्ट को किन रिप्रेजेंट करती ए डॉट बी तर वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of b into cos theta वेक्टर प्रोडक्ट तो किन रिप्रेजेंट करंती क्रॉस रे एडा को डॉट प्रोडक्ट एडा को क्रॉस प्रोडक्ट
magnitude of A into magnitude of B into sin theta ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି eta ଏଇଟା ହଉଛି କଣ it so gives the direction dot product ରେ no direction for example work done equal to force or displacement ର dot product work ଗୋଟେ ହଉଛି scalar quantity okay dot product by ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ scalar product ବି କୁହାଯାଏ okay ତାର no direction ମାତ୍ର vector product ରେ direction is present okay तो ଏବେ ଆମେ vector product को thoroughly पढ़िया ओके तो ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଦିଟା vector example ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦିଟା vector ଗୋଟେ ହଉଛି vector a ଗୋଟେ ହଉଛି vector b माने करो vector c is equal to vector a और vector b ର cross product ओके तो c ର value केते हो c ର magnitude केते हो magnitude केते हो c equal to a b sin केते लाउच magnitude direction में it gives the direction आउथर कट touch ओके तो डायरेक्शन हमें केमती कैलकुलेट करिया तार हमें एते जदि दीटा वेक्टर हम पाखरे अछि एडा होछि वेक्टर ए एडा होछि वेक्टर बी ओके आंक दी जण भीतर एंगल होछि थीटा ओके तो हमें वेक्टर सी होछि तार एते पळ आसला मैग्नीट्यूड काढे पे भी फॉर्मूला अछि हम पाखरे आर मैग्नीट्यूड रो मल्टीप्लिकेशन इनटू sin थीटा टेक एटा बट तार डायरेक्शन हम किन काढिया डायरेक्शन काढिया पे दीटा वे अछि कोन कोन दीटा वे गोटे होछि स्क्रू रूल right handed screw rule right hand screw rule ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି right hand thumb rule okay right hand screw rule ला कौन जदि हमको एडी वेक्टर c रो डायरेक्शन काढियार अछि वेक्टर c रो डायरेक्शन वेक्टर c इक्वल टू को कहले a into b सबले मन रखो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस है तो एडी एटा मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होया नो तो से a क्रॉस b कहउछि तो a क्रॉस b इज एज इट इज a क्रॉस b ही नियो ओके तो a क्रॉस b मु a क्रॉस b रो डायरेक्शन हेने पे जाउछि तो एटा कैलकुलेट करे हम कोन करी एडी गोटे तमे स्क्रू को इमेजिन करो एडी गोटे स्क्रू मानकर अछि टिक 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 आयरन नेल स्क्रू डा तो मु जदि मान करो a क्रॉस b अछि तो मु स्क्रू डा को a टू राइट बोलो a टू राइट रोटेट कर a टू b को माने a क्रॉस b अछि तो a टू b रोटेट कर a टू b रोटेट कले कोन हबो स्क्रूटा पड़ जीवो भितरु जीवो कंपेरेड अछि क्लॉकवाइज बोलछि a क्रॉस b कले क्लॉकवाइज बोलछि सेति पई एटा इनवर्ड जीवो स्क्रूटा को पड़ जीवो इनवर्ड तो c रो डायरेक्शन होचे इनटू द पेज ओके सेम सिमिलि जदि वेक्टर c इज इक्वल टू इफ वेक्टर c इक्वल टू b क्रॉस a तो एबे हम कहने b क्रॉस a कले कोन हबो उल्टा करियो दीटा वेक्टर अछि वेक्टर a वेक्टर b एंगल होछि थीटा तो जदि b क्रॉस a b टू a रोटेट करियो स्क्रू अपने की b टू a कोन हबो एंटी क्लॉकवाइज तो c टा को स्क्रू टा को प्लस ऊपर आसियो अपवर्ड आसियो एडी कोन जातला भितरु जातला इनवर्ड जातला एबे आउटवर्ड आसियो तो c रो डायरेक्शन का हबो out of the base okay आई होप तुम डायरेक्शन तीन कैलकुलेट पड़े बुझा बुझ स्क्रू रूल होछि सबटु इजी अट पाम रूल भी तुम करि परियो पाम रूल ले कोन करे अछि पाम रो अल्नर बॉर्डर सॉरी तुम हिंदी कह दोछि मेडिकल टर्म रे बोले अल्नर बॉर्डर माने होछि लिटिल फिंगर टा को जदि a क्रॉस b अछि चोपटे लिटिल फिंगर अछि सेपटे हमें पाम को रखिया ओके पाम को वर्टिकली रखियो तापर कोन करियो a क्रॉस b आंगुठी गुडा को बी पट्टे मूव करियो आंगुठी गुडा को बी पट्टे मूव करियो और थंबड़ा जो डायरेक्शन रहयो सेटा शो करियो कोन वेक्टर सी रो डायरेक्शन सेम तो बी क्रॉस ए अछि राइट हैंड एपड़ रखियो ए एंड मूव करियो आउट ऑफ द पेस अवल शो करियो तुम निजे ट्राई करो भाबी के एटा को एबे रखी फिंगर आराम से ओके तो एबे तुम मो मैग्नीट्यूड कह देली डायरेक्शन भी कह देली और सब बेले मन रखो जो वेक्टर सी रो डायरेक्शन एडी मन करो वेक्टर सी will always be perpendicular to both the vectors both a and b मन रहिला आर मीनिंग होची
जो भी वेक्टरटा आसियो दीटा जदि हम दीटा वेक्टर नोचन ए और बी आ तार वेक्टर प्रोडक्ट करचंदी जहां हम रिजल्ट आसियो से वेक्टर डायरेक्शन जहां भी रिजल्ट आसियो से वेक्टर डायरेक्शन टा will always be perpendicular to both the vectors. Okay, so it A और B अच्छी तो वेक्टर C रो डायरेक्शन को प्राइस ला ऊपर आउट ऑफ द प्लेन सब बोले आपको परपेंडिकुलर रहे दीटा जा वेक्टर को परपेंडिकुलर एटी भी यदि इनवर्ड रहला दीटा जा वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर C नेक्स्ट सब बोले मानो रियल बी परपेंडिकुलर तो बुक देख दा magnitude of C is equal to AB sin theta coiling C is perpendicular to the plane containing E. If we take the right-handed screw with its head lying in the plane of A and B, the screw perpendicular to the plane, if we turn the head in the direction of A to B, the tip of the screw advances in the direction of C. Okay? So, if vitru jaଉଛି तार direction vitru, so if baharu आसे तार direction upru. Okay? The screw rule एति तो कहै छै एति तो मैं explain तमो कर दी एबे हमें पढिया properties of a vector. Properties of a vector. First property तमो बोल से इजा कहतिली से property टा कोन A cross B is not equal to B cross A. Okay. कौन भाई magnitude दिसन जगह same A cross B रो magnitude is same but direction is opposite. Okay. So the A cross B कलाडू vector C आस्तिला तार direction टा कौन होतिला outward. A cross B कलाडू कौन आस्तिला तार vector sorry inward आस्तिला into the space. A cross B कलाडू तो C vector थिला तार direction तो पड़तिला into the space. B cross A कलाडू वेक्टर डायरेक्शन को पड़तिला आउट ऑफ द प्लेस तो केबे भी एदिरा इक्वल होबो कि नो तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी मीनिंग तार दिला मैग्नीट्यूड अछि डायरेक्शन अछि खाली मैग्नीट्यूड सेम हैला हम से दिरा केबे सेम कहि पारे इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी दिरा हम सेम कहि पारे तार सेम होबा पे तार मैग्नीट्यूड भी सेम दिवार अछि डायरेक्शन भी सेम दिवार तो डायरेक्शन सेम है इज सेम नो ओके बट इडा हमें कोन कहि पारे डायरेक्शन ना जेहेतु अपोजिट गोटे भितरु जाउछ गोटे बाहर अछि जदी हमें कोन करिया A क्रॉस इक्वल टू जदी हमें माइनस लगे दबा देख एबे कोन होतला A क्रॉस B माने कोन से भितरु जाउतला इनवर्ड थिला आ B क्रॉस A रे से बाहर आस्तिला जदी इडा हमें माइनस लगे देले तार भी डायरेक्शन अपोजिट हे जियो तो से दीटा सेम हे जियो ओके तो जदी हमें माइनस लगे दा B क्रॉस A रे आर भी डायरेक्शन टा कोन हे जियो बदल जिवो आर भी डायरेक्शन टा चेंज है कि इट विल बी द सेम एज डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस तो दीटा सेम है तो जदी माइनस लगे माने डायरेक्शन बदल जाए ओके हाउ व्हाट अ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोन जेने हमें डॉट प्रोडक्ट रे जदी तीनटा वेक्टर अछि A वेक्टर B वेक्टर C A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Same similarly, cross product of B distributive law is applicable. A cross B plus A cross C. How about the interesting law or interesting property kanaro behavior under reflection. Behavior under reflection. तो जति हम गोटे मिरर नबा मिरर रे एटा को हम 3D रे इमेजिन करो रोजेक्ट रोच वाई रोच जेड ओके तो जते हम मिरर इमेज देखिया x रो मिरर इमेज कोन आसो -x y रो मिरर इमेज कोन आसो -y z रो मिरर इमेज कोन आसो -z जति हम दीटा वेक्टर हम पाखे अछि वेक्टर A और वेक्टर B आर मिरर इमेज कोन आसो -a आर मिरर इमेज कोन आसो -b ओके तो जत हम A क्रॉस B करबा तार वैल्यू केते आसीबो A क्रॉस B कले केते आसीबो A क्रॉस B कले जते आसीबो तार तार मिरर इमेज रो भी जदी हम क्रॉस प्रोडक्ट करिया
तार वैल्यू सेम ही आसियो ओके तो जब हम मिरर इमेज भी करछन दिख जार वैल्यू वैल्यू रिमेन सेम ओके देखो तीन टाइम्स मु कहि दउछि जैसे हम अब तुमको कहले a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a कौन भाई कौन पे डायरेक्शन बदल जाए तो एटा बुझा पड़ा तापर एटा जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अंडर रिफ्लेक्शन a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस a क्रॉस माइनस b कौन पे तो मैं दीटा माइनस माइनस असले प्लस होची इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओके तारे फोर्थ प्रॉपर्टी को आसछि फोर्थ प्रॉपर्टी हमें कौन देखिया किमिनि हमें वेक्टर प्रोडक्ट काढिया दीटा वेक्टर हम दिए छि कौन करिया किमिनि काढी जदि मु वेक्टर a अछि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a मु करी तो एटा मन कर अछि मोर x एक्सिस और x z एक्सिस एटा अछि वेक्टर a तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू sin थीटा थीटा टा केते होबो a वेक्टर सहित a वेक्टर हम मल्टीप्लाई करछन तो थीटा केते होबो एडी 0 डिग्री तो वेक्टर a into वेक्टर a sin 0 is equal to 0 sin 0 is equal to 0 0 तो सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से तो दिया मल्टीप्लाई करिया तार मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी 0 ओके तो फॉर एग्जांपल हमें एडा तो हमें जानितियो x एक्सिस को i कैप रे रिप्रेजेंट करा जाए y एक्सिस को j कैप रे रिप्रेजेंट करा जाए z एक्सिस को j एक्सिस को k कैप रे रिप्रेजेंट करा जाए ओके तो यदि i कैप क्रॉस i कैप তাহলে কেতে হবো সেম অ্যাঙ্গেল 0 sin 0 0 মানে x एक्सिस रे सेम रे जो वेक्टरটা আছে আইরনিং वेक्टरটা সেম एक्सिस তো দুই জনের তো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 0 না তো sin 0 ইকুয়াল টু sin 0 তো মাল্টিপ্লাই হবে ভ্যালু 0 হয়ে যাবে সেম সেম লিখ jk 0 k 0 ଏବେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିଆଲା ଜିନିଷ କାଣିଆ ଦେଖିବାର ଅଛି ତିନଟା एक्सिस ମୁଁ ବନଉଛି ପୁଣି କରେ ଏଟା ହଉଛି x एक्सिस ଏଟା ହଉଛି y एक्सिस g एक्सिस ओके i कैप क्रॉस j कैप डायरेक्शन जाने पे मु कोन कहथिले स्क्वायर रूल अप्लाई करो i into j एडी गोटे स्क्रू रखी के इमिति बुला ट्राई करो कपड़े बुझ ठीकटा बाहर आछछ ना नहीं एडा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होचे स्क्रू को रखो टिक 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 एडा स्क्रू स्क्रूडा जतरा में एंटी क्लॉकवाइज मूव करे से कोन आछो बाहर आछियो आउटवर्ड आछे कोन पॉजिटिव एक्सिस रहियो माने द डायरेक्शन द को डायरेक्शन रहबो के डायरेक्शन रे पॉजिटिव के प्लस रहियो के तापर हम देखिबा j क्रॉस k को के डायरेक्शन रे मूव करो एडी गोटे स्क्रू रखो इमेजिन सब वेक्टर इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन ओके तो j कैप को रखी के y कैप रो डायरेक्शन रे either तमे स्क्रू बुलाओ या फिर राइट हैंड रूल लगाओ सब ता डायरेक्शन तमे कपड़े पाइबो तबे x एक्सिस रो डायरेक्शन और सेटा भी कोन पॉजिटिव आई ठीक है तापर सेम सेम दे k क्रॉस i इज इक्वल टू प्लस j ए सब किछ घोषिया दरकार है सब वंडर इमेजिनेशन रे ओके मात्र सेम जिंस को तो हम उल्टा करिया j क्रॉस i करिया कोन हबो y एक्सिस रखी z i x एक्सिस रे तो मूव करे कोन हबो स्क्रूडा कट जीवो भितर जीवो इनवर्ड माने नेगेटिव के सेम सेम दे सब जाको नेगेटिव हे जीवो ओके तो एती जिंस मन रखो आउ बाकी जति जिंस जति तुम दीटा वेक्टर दे दीची फॉर एग्जांपल वेक्टर a गोटे एग्जांपल दे दीची वेक्टर a x i कैप प्लस सॉरी a y j कैप प्लस a k ऐसे सॉरी a z k कैप b गोटे दे दीची b x i कैप प्लस b y j कैप प्लस b z k कैप जदि हम ए दीटर वेक्टर प्रोडक्ट काढियार अछि a क्रॉस b तो केमति करिया हमें देखो अपरे मु न्यूमेरिकल वाला एग्जांपल जोटे सॉल्व कर दे इजीली ओके तो जतरा हम क्रॉस प्रोडक्ट देबे अछि एडा को हम तीनटा सहित मल्टीप्लाई करियार अछि से तापर आथरे एडा को तीनटा सहित मल्टीप्लाई करियार तो एडा को भी तीनटा सहित मल्टीप्लाई करियार अछि ओके तो मोस्ट तीनटा लिखि दिया सेमने फर्स्ट टाइम करछु सतिया मु टिके एक्सप्लेन रे करछि
प्लस ओके तापर ए जेड के कैप into bx I cap plus by j cap plus bj k cap okay I cap तो मल्टीप्लिकेशन 0 होबो तो सेडा को लिखे कि दरकार ही नहीं तो कौन लिखबी नेक्स्ट ax by I cap into j cap I cross I 0 होला तो छोड़ा एडा I दिला किसी मल्टीप्लाई करते दरकार नहीं 0 लिखि दो 0 बने तापरे ax into by I cross z तो लिखता तो k cap पॉजिटिव k cap ओके तापरे I cross k के लिखता वो लिखतिली वो सॉरी एटा मो तो मो भूल लिख देथिले सॉरी एटा हबो k cap cross j cap एडी हबो सेमती I cap cross k cap हेले नेगेटिव अछि ओके तो एडी I cap plus k cap I k cross k cap equal to minus of j cap तो एडी माइनस प्लस ला मोर a into b z तो I cap रे नेगेटिव ओके सेम सेमती ए जे क्रॉस आई केता वो जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई कले माइनस के कैप पकड़ी माइनस के कैप ए वाई एक्स के कैप ओके जे जे 0 छाड़ो जे इनटू के जे क्रॉस के कैप केता वो आई कैप प्लस आई कैप देखो जहां मन पुनी जो देखो ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई कैप ओके तापर आउथरे के क्रॉस आई केता वो माइनस जे ठीक होची के वो ना के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस जे के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस जे तो प्लस लिखो ए जेड बी एक्स प्लस जे के क्रॉस जे के लगे तो माइनस आई माइनस आई पकड़ा करते हैं माइनस ऑफ ए जेड बी वाई एक्स तो ये सजे भी लिखि दो आई कैप फर्स्ट लिखि दियो आई कैप रे कोन कोन अछि दीटा आई कैप रे Recording in progress. cos थीटा थीटा इक्वल के तब cos 0 इक्वल टू 1 बट जता हम i को j से तो मल्टीप्लाई करिया गोटे x x रे আছে तो y x रे আছে दीटा रो कोन होचे एंगल 90 डिग्री तो cos 90 इक्वल टू 0 तो सबुले मन रखो cos प्रोडक्ट कलाडू जोड़ा जोड़ा सेम एक्सप्रेशन ओनली दैट को हम मल्टीप्लाई करी एड अप कर दा तो 3 into -2 इक्वल टू -6 -4 into plus into 1 इक्वल टू -1 5 into 3 equal to 15 ओके तो तार वैल्यू केता -10 plus 15 एठी ये एडी +5 के नीचे एडी मात्र 3 के को वेक्टर वाला -3 के लिख दीते सेति तार कैलकुलेशन एडी और डिफरेंट अछि सेडो देखा एडा एपट देख ओके +5 एडा अछि डॉट प्रोडक्ट तापर असला मु वेक्टर प्रोडक्ट पे कोन करिया तो मु आउटे जिंस कहि दोछ देखो वेक्टर प्रोडक्ट में हमरा डायरेक्ट फार्मूला अछि आई के पेट लेके ए वाई बी जेड बी वाई